हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एफडीए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट सिलेबस की। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफडीए सिलेबस की डिटेल की, कौन कौन से सब्जेक्ट है, उनमें कौन कौन से टॉपिक एफडीए एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। फर्स्ट, कल हमने बताया था जैसे कि फॉरेंसिक फार्मेसी में से क्वेश्चंस आते हैं, तो फॉरेंसिक फार्मेसी में से ये टॉपिक्स मोस्टली पूछे जाते हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट 1954, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट है। इसमें इथिकल्स ये सबसे रिलेटेड आते हैं। इथिक्स के एनिमल इथिक्स कौन कौन से हैं और कब इन्वेंट हुए थे, कौन सा एक्ट लगता है वो। नेक्स्ट आ जाता है ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर 1995, नेशनल असेंशियल ड्रग लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन से ड्रग्स हैं और कौन कौन से उनकी कितनी प्राइस है, मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस, वेरिएशन सिम्स एंड मिम्स में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, पॉइजन एक्ट 1990 एंड डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 में से आते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक्ट मोस्टली पूछे जाते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब। फार्मास्यूटिकल इथिक्स, वही जो मैंने पहले बताया, इथिक्स की पेटेंट और मोस्टली एनिमल इथिक्स, ये सब फार्मास्यूटिकल उनके यूजेस भी। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है मैन्युफैक्चर फार्मेसी। इसमें मोस्टली टैबलेट एंड कोटेड टैबलेट क्या होते हैं, कैप्सूल्स क्या होते हैं, ब्लड फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, हाउ पेरेंटल प्रिपरेशन इज मेड एंड व्हाट इज quality control, how we should do quality control of these drugs, emulsions, what is emulsion, suspension, ointment, creams, ophthalmic solutions, surgical dressing, biological preparations such as vaccine, sera, anti-sera, what is difference between vaccine, sera and sera, these all, and pharmaceutics. फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जैसे कुछ टेस्ट होते हैं परफॉर्म करने के लिए, ड्रग्स की एफिकेसी ये सब जानने के लिए, टॉक्सिसिटी जानने के लिए और एडल्ट्रेंट जानने के लिए, मिक्सचर या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है वो ड्रग प्रिपरेशन में, या कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स तो नहीं है, जैसे लिमिट टेस्ट, बायो एसेस, स्टेरिलिटी टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ विटामिन, antibiotic, pyrogenic test, theory and applications of calorimeter, fluorimeter, nephelometer, turbidometer and their uses, जो पहले ही बोला है, applications and theory, how the mechanism is acting on them, this Fisher titrations, alcohol determination testing, microbiological assay of vitamins, antibiotic, vaccine preparations, these are mostly ask questions. नेक्स्ट आ जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। पहले ही मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर, स्टोरेज, ब्रांड नेम ऑफ दी फॉलोइंग सच एज स्टीरॉइड, एंटीहिस्टामिन एजेंट, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, psychotherapeutics agents, analgesic, cardiovascular agents, what are their uses and their area, what area they causes and how they act on which receptor, these all has been asked, and chemical formula. Next is pharmacogenesis. It is the study of medicines or drugs produced from natural sources such as plant, microbes and animals, such as in this these structures and chemicals constituent is studied for checking the adulteration, their uses, such as for example to see how they are used, opium, kurchi, brahmi, cinnamon, belladonna, these all are mostly asked in the questions.
Now, another is mostly important pharmacology and toxicity. You know, now mostly we study in a pharmacology, we study efficacy, safety, and toxicity of any drugs. You know importance of ED50 and LD50. If you don't know, then you can watch my another video. I will make that video for you. This you have to study about the introduction of general principle mode of action, that how the drugs is acting, what is the mode, mechanism, all that, on which receptor that drug interact, drug antagonism, how the drug metabolize, excrete or distributions of that drug, routes of drug administration, that which drug has that route, and which route will be efficacious if the drug used, and in a serious condition which route should be used, and these all are the question asked mostly. And bioavailability, everybody knows about the bioavailability. Drug dependence and addictions, most important topic. What are the adverse reactions, drug abuse, drug toxicity, you have to study detail about this also. Drug allergics, biostatics is very important. It's important in all the it's not only in the pharmac or FDA exam, another difference exam is also asking questions from biostatics. You know, it is important for research, dissertation, whatever you want to do, mostly bias is required. Mean, mediums, and that all. Now next another subject is anatomy, physiology, and health educations. In this, the basic knowledge of the following has been asked, such as blood, eye, ear, digestive system, nutrition, first aid, population control, AIDS control, reproductive system, urinary system, respiratory system. The detailed study about this has been asked, about basic knowledge, that what mechanism are involved, which receptor is acting, these all, how the drug will act, what is the anatomy or physiology of that things, such as. Another subject is hospital and clinical pharmacy. In this you have to study about handling of prescriptions, such as pharmacovigilance, and about does the prescription contain every detail about the supposed patient's name, age, sex, every detail of the doctor, registration number, does the drug has been prescribed in correct order or not. Now there's a new rule has been come, that every drug should be in written in capital letter, that you have to check about the order has been corrected, or capsules, tablet, how the order has been arranged, that mostly study. And what is yellow prescription, white prescription, how red prescription has been used, mostly that. Storage conditions of drug, incapability, clinical pharmacy, these detail about this all you have to be carried out. You should have knowledge about this. Another last one is general knowledge. In this, the Indian Constitution, science, inventions, discoveries, what is our history, India and neighboring countries, our knowledge about sports. These are all general knowledge. What are current affairs going on? It can be asked anything about the GK. Scientific researchers, culture, country and capitals, importance of financial and economical news. What is economy, banking, finance, budget, and 5-year. What are the 5-year plans? Geography. These all has been asked. Thank you friends for watching, and all the best for your future. Please like, share and comment on my YouTube channel. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.